Okay. Perfect. So, hi, hello, good afternoon, my dear students. This is Ritika, your chemistry educator, and we are back here at Unacademy bringing some of the very important and informative sessions for all of you, my dear young learners. So today, hi Yash, hello, how are you? So basically today this is our chemistry session, and as you might be knowing that we are going to have a very important session, that is the question answer session. अभी क्या होता है ना, हम लोगों को कंसेप्ट अच्छे से मालूम होता है, थ्योरी मालूम होता है, लेकिन we are always struggling how to write the proper answers. So that is why the question answer session becomes very important, because at the end of the day आपको एग्जाम में answers ही देने, right? So today we are going to focus on how to write the answers, what should be our technique, हमको क्या method follow करना चाहिए to write the effective answers. All right. And talking about myself, I am your chemistry educator. I have completed my engineering in electronics and communication, and have been awarded as competent leader by Toastmasters International. Now students, you can join a telegram channel. तो अगर आपको कोई help चाहिए in the class notes or if you need your help in homework, तो आप लोग join कर सकते हैं मेरा telegram channel. Also आप लोग join कर सकते हैं the official telegram channel of Unacademy ICSE board. तो इससे क्या होगा ना, you'll be staying updated with all the ongoing offers, with all the things that are happening at Unacademy. तो प्लीज ज्वाइन करिए इन चैनल्स को. द लिंक्स आर प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. वी विल बी फॉलोइंग द सेलिना, okay, which is a standard book, and we will be solving in text questions as for now. Okay, और जैसे जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन करते जाएंगे, we will be moving forward towards some higher level questions. Okay, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो इफ एनीवन वांट्स टू आंसर, यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करें तो इन दिस पीरियोडिक लॉ atomic number, this was taken as the fundamental property, है ना. जैसे हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, in that periodic law he told that the fundamental property of the element is the atomic mass. Okay, और उसी को consider करके मेंडलीव he gave his periodic table, but there were certain problems due to which this law was not very applicable, it was not very perfect, and then it was the modern periodic law which came up. तो modern periodic law क्या suggest करता है? It states that physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic number. ओके, तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेट अस डिस्कस देम फर्स्ट. सो फर्स्ट आता है पीरियोडिक फंक्शन. यस, व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? If anyone wants to tell me the answer, please go ahead. क्या मीनिंग रहता है पीरियोडिक फंक्शन का? Now basically अगर मैं बताऊं अगर पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग, so what do we mean by periodic function is the repetition, है ना. If you have seen the modern periodic table, क्या होगा, एक certain interval of time के बाद जो है properties repeat कर रही है, they are repeating themselves after a certain period of time. Okay, तो that is known as periodic function. Periodicity जिसे बोलते हैं, the repetition of properties
of the elements after a certain interval of time. Okay, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये बोला गया है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की, वो किस वजह से होती है, वो होता है एटॉमिक नंबर की वजह से. ओके, इन द अर्लियर टाइम मेंडलीव ने कहा था सेम लॉ था, बट पीरियोडिक यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मासेस का था. ओके, एंड दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. So after that it came up that the properties are periodic function of their atomic numbers. Okay, ये जो law था, this law, it was just a second, yeah, so this law it was put forward by Henry Moseley. Okay, so who gave this law? This law was given by Henry Moseley. And talking about our modern periodic table, इसमें total 7 periods हैं and 18 groups. Okay, period क्या होता है? They are running horizontally and groups they are running vertically. So we are having 18 groups in total and 7 period in the total in our modern periodic table. Okay, so I hope that this question is very much clear to you. Let us move on to the next question. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाय यशराज, चेंजेस. फर्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and second है from top to bottom. So this is the question and let us see now how we are going to answer this. So can anyone tell me the first answer from from left to right क्या changes हो रहे हैं periodic table में, electronic configuration में? हाँ जी, yes, Yashraj, anyone? ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. करेक्ट, बट व्हाट हैपेंस टू नंबर ऑफ शेल्स? सी, यहाँ पर यही चीज है, बिकॉज हाउ डू वी आंसर, इट रियली मैटर्स, और हमारा मार्क्स पूरी तरह से डिपेंड करता है. अगर आप लोग लिख देंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ऑफ कोर्स ये राइट है, बट इट इज नॉट द कंप्लीट आंसर. ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इट कंप्लीटली. यस, तो पूरा बताइए व्हाट हैपेंस. हाँ जी, ओके, सो टॉकिंग अबाउट लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा पीरियड, है ना. लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पीरियड. यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स सेम है ना. इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इन सब में नंबर ऑफ शेल्स दे विल बी रिमेनिंग सेम. ओके, लेकिन यहां क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हो रहा है. और कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1 by 1. तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहा है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग 1 by 1, but the number of shell it is same. Okay, so kindly explain it in a bit complete manner, so that whoever sees your answer, it gives think that okay, the complete thing. Okay, so do not write the half answers. Explanation is very very important part. Next है top to bottom. तो top to bottom की अगर हम बात करें, तो we are talking about the group. Okay, so if you are moving from top to bottom in a group, what is happening? क्या हो रहा है top to bottom में? हाँ जी, what is happening in top to bottom? See, top to bottom में क्या हो रहा है, number of shells increase हो रहा है. So number of shells increase.
ओके अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है, सो यू कैन राइट ओवर हियर, यू कैन मेंशन दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is same, okay, according to group, but because number of shells are increasing, so number of electrons are also increasing. okay, तो बेसिकली दोनों साइड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से चेंज हो रहा है. टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है, तो शेल के अकॉर्डिंगली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. एंड लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, शेल सेम है लेकिन one outermost electron increase हो रहा है. Got it everyone? चलो moving on to next question. So your next question is elements of group 1 and group 17 both have valency 1. How? हाँ जी, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 1 के और ग्रुप नंबर 17 दोनों का जो वैलेंसी होता है 1 होता है. क्यों होता है? हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट? या एनीवन? Why do the elements have the same valency talking about the group number 1 and group number 17? चलो तो सबसे पहले तो वी शुड बी नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी. क्या होता है वैलेंसी? बिकॉज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर 1. बेटा पर वो तो ग्रुप नंबर 1 में ना, 17 में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है. So the definition of valency itself will be giving you almost 80% of answer. What do we mean by valency? क्या होता है वैलेंसी? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी. अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन ईदर डोनेट और गेन और शेयर. ओके तो ये सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्यों रही है? बिकॉज एवरी एलिमेंट इट नीड्स स्टेबिलिटी, राइट? अभी अपार्ट फ्रॉम द नोबल गैसेस किसी का भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता है. एंड टू एक्वायर द स्टेबिलिटी दे रिक्वायर द आउटरमोस्ट शेल टू बी फिल्ड. तो उसके लिए क्या होता है? दे कैन ईदर डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स और दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. द रीजन बीइंग टू एक्वायर stability. Okay, तो वैलेंसी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल it is the number of electrons which can be donated, gained or shared. And because it is number of electrons, it will always be positive, है ना? तो वो जो साइन होता है -1, +1, -2, that is the charge. Okay, which depends on if the electron is donated or if it is gained. Okay, लेकिन अगर वैलेंसी का बात करें तो it will always be positive. अब बात करते हैं elements of group number 1 and group number 17. So if I talk about the elements of group number 1, how many outermost electrons are present in the valence shell? Yes, group number 1 के outermost shell में कितने electrons present होते हैं? हाँ जी, anyone? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1. गुड. सो 1 इलेक्ट्रॉन. अभी यहां पर क्या होगा ना, देयर कैन बी 2 थिंग्स विच कैन बी डन. फर्स्ट इज ईदर इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन या फिर द सेकेंड केस इट कैन एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन. तो क्या इजी होगा फॉर ग्रुप नंबर 1? डोनेट करना ज्यादा इजी रहेगा या एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजियर? तो डोनेट कर दिया उन्होंने 1, तो यहां पर हो गई वैलेंसी 1.
ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 17. ग्रुप नंबर 17 के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? So how many electrons are present in the outermost shell, in the valence shell of group number 17? 17 electrons, really? 17 होते हैं, 7 होते हैं? 7, करेक्ट. अभी इनके पास भी दो कंडीशन है, या तो आप 7 को डोनेट करो या फिर 1 को गेन करो. क्या इजी रहता है? नॉट श्योर बेटा, श्योर हो जाओ. इट इज 7 ओनली. ओके, सो हियर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज इजी. ओके, सो यहां पर भी वैलेंसी हो गया 1. अभी यहां पर ना हम लोग चार्ज की बात नहीं कर रहे बच्चे लोगों, इसीलिए सी in group 1 it donates 1 electron, so it is 1 electron. Okay, in group 17 it gains 1 electron, तो वहां पर भी 1 आ गया. अब वो चार्ज माइनस या प्लस हो जाएगा because of the thing that it will be donating or gaining the electrons. Okay, so this will be your answer, that the elements of group number 1 and group number 17, they are having same valency because of this explanation. Okay, so this is the reason. Got it everyone? यहाँ तक clear हो गया सभी को? Can we move on to next question? Yeah, I can see you are here and I said hi, and now I'll request you to pay attention here. चलो next question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे. So your next question is define periodicity. हाँ जी, बहुत ही easy question है. What do we mean by periodicity? I guess the easiest question that you can have now. Yes, Surinder, I had a doubt कि ये काम आप ही का है. But anyway, focus here and answer the questions. What do we mean by periodicity? 9th में भी पढ़ा था ये तो. No one? Okay, so periodicity क्या है? Basically it is the repetition. Okay, what do we mean by periodicity? It is the repetition. Okay, so we can define it, repetition of properties at regular intervals of the f time increasing or decreasing gradually. Correct, Yash, perfect. So these are the there are certain properties which are repeat after certain interval. या तो वो पूरी तरह से रिपीट करेंगी या फिर उसमें we will be seeing a gradual variation. Gradual variation means there could be an increment, धीरे धीरे कुछ increase हो रहा है या फिर धीरे धीरे से कुछ decrease हो रहा है. So this is the thing that we will be seeing. तो इनको हम बोलते हैं periodic properties. Okay, and this whole phenomena, it is known as periodicity. Okay, so what is periodicity? It is the phenomena of repetition of properties after certain interval of time or in which we can see the gradual variation. This is known as periodicity. And अच्छा, what is the cause of periodicity? अभी discuss किया था हमने. What is the cause of periodicity? Anyone? क्या रीजन होता है पीरियोडिसिटी का? Yes, due to similar electronic configuration. Correct, Yash, perfect. चलो नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है typical elements. So what do we mean by typical elements?
Which elements are known as typical elements? Correct, Trisha. Let's move on to typical elements. Which type of elements या कहाँ पर present होते हैं and why they are called typical elements? Any idea? No one? The elements of group 1, 2, 3, 13, not really. बेटा उनको तो हम कुछ और ही बोलते हैं. जो टिपिकल एलिमेंट्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पीरियड 3 में. ओके, कौन से एलिमेंट्स है? दीज आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ओके, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स है दे आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स. एंड कैन एनीवन गिव मी द रीजन why are they known as typical elements? क्यों बोलते हैं उन्हें typical elements? Yes, Trisha, Yash, Surinder, Shreya. Why are these elements known as the typical elements? Okay, so if you notice the periodic table, ये जो एलिमेंट्स है ना ये क्या करेंगे अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब कि जो सोडियम का ग्रुप है, जो मैग्नीशियम का ग्रुप है, जो एल्यूमिनियम का ग्रुप है, दे विल बी समराइजिंग द प्रॉपर्टीज. ओके, तो ये क्या करते हैं? दे समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप्स. ओके, तो इसीलिए दे आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स. अच्छा, अभी आई हैव द चैलेंज फॉर द डे फॉर यू ऑल. अभी हम लोगों ने बात की कि टिपिकल एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 3. तो इसके ऊपर एक और पीरियड भी तो है. चलो, फर्स्ट पीरियड में तो हम कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम. लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स भी तो हैं, तो उन्हें टिपिकल एलिमेंट्स क्यों नहीं बोला? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को ही टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोला? सो दिस इज योर क्वेश्चन. And I hope that before we end the class, I get the answer from any one of you or maybe all of you. Okay? So, chaliye, I hope you might have understood the question, and now we'll be moving on to next question. So, next question is you have to define what is the meaning of orbits. What do we mean by orbit? Shell or orbit, what is meant by them? Yes, anyone? What is the meaning of orbit? So orbit, they first of all they are also known as shells. And what are these? These are the circular path. Ma'am, please do arranging questions on the basis of properties. Okay, so we were solving actually in text question. I'll just see if we are having any type of questions. हाँ जी बेटा, हमारे पास 2 or 3 questions है. Okay, let's move on to them after this. Okay, तो इसके बाद हम लोग वो करते हैं. तो shell or orbit, what are these? These are the path for the revolution of electrons around nucleus. Okay, so this is
meant by orbit or shell. हाँ जी, यहां तक सभी को समझ में आया? Is everything clear up till here? Any confusion, anything that you haven't understood, kindly let me know. Alright, so I hope that everything is clear up till here, and I'm having a very very important information for you. So there's a gift coming your way tonight, and you guys get ready to unbox it. Okay, तो जुड़े रहिए Unacademy से, and you'll be getting to know what the surprise is tonight. So please stay updated. Okay, and let's see what you get. Next thing is the special classes. So you can also attend the special classes, students. Okay, बिल्कुल free of cost है. You can learn from your favorite educators. You can engage with your educators via polls. तो polls क्या है? MCQ type of questions है, जिसमें you can select your options according to your choices. And also we are having live special class, जिसमें कि you can clear your doubts. So if you want to visit the top special classes, you can see the links which are provided to you in the description box. Next बात करते हैं Unacademy subscription की. तो why should you be subscribing? Because you'll be getting all the courses under one platform. You will be having regular doubt clearing sessions, answer writing sessions जैसा कि अभी हो रहा है. Then your syllabus will be covered properly. All the study material will be provided to you in the PDF format. You'll be having the practice test, live tests, batch courses and whatnot. So you're getting the whole package, and you can take any particular subscription plan according to your choice. It could be 3 months, it could be 6, 9, 12, 24, anything that you like. And then you can use my code. So basically this is my code which will be giving you an extra 10% discount. So go for it and subscribe to Unacademy Plus. Okay, तो अभी हम लोग ना one arranging type of question solve करेंगे. Alright, so this is your question. The electronic configuration of an element T is 2, 8, 8, 1. Now on the basis of this you have to answer the questions. First is group number of T. हाँ जी, बताइए क्या ग्रुप नंबर होगा T का? Yes, which group will be the element T belonging to? One, what is the reason behind that? Because the outermost shell contains one electron. Okay, so that is the reason. And the question number 2 is period number. क्या पीरियड होगा इसका? Which period does this belong to? 4. The reason is, what is the reason? क्यों ये period 4 का part? Because of 4 shells. Very good. So it belongs to period number 4. The number of shells present in any element determine their period. Okay. Valence electron. I'm sorry. कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? How many valence electrons are present? 1. Therefore the valency will be, valency कितना हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा. And is it a metal or non-metal? And give me the reason behind that. Metal है या non-metal है?
Correct Ankit, correct Yash. Metal, and what is the reason behind that? Correct, metal, because it will donate 1 electron. अच्छा, डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पे? Which charge it will be having? Positive. Good. Moving on to next question. So next question is, answer the following questions with respect to element this. So this is your element. Abhi, what is the electronic configuration? Hanji, what will be the electronic configuration of this element? 2,8,6. एटॉमिक नंबर 32 होगा या 16 होगा? हम्म 16. तो 32 क्या होगा? What will be this 32 here? It will be atomic mass. Good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप एंड पीरियड? कौन से ग्रुप और पीरियड से बिलोंग करता है ये? Third period, group number 16. So how do we get to know it? 3 shells मतलब कि third period, and 16 we come to know by the number of outermost shells. Okay, next question is valency. क्या valency है इसका? Why 2? outermost shell में तो 6 electrons है. Why the valency is 2? बताइए. Very good, because it is gaining 2 electrons. So valency 2, or since it is gaining, it will be a non-metal. Okay, उसके बाद we are still having questions. 2 questions are left. So is it reducing agent or oxidizing agent? क्या होगा? सल्फर, oxidizing agent. Good, correct. And what will be its formula with chlorine? What will be the formula with chlorine? Reducing and oxidizing वाला समझा दो बिल्कुल. Let me know the formula with chlorine and then we'll be moving on to the reducing and oxidizing. चलिए बताइए.
SCl2, वेरी गुड. अभी कैसे हुआ? आई होप एवरीवन नोज इट, राइट? बैलेंसी से it is S2 minus Cl, and then what will be happening? It will be crisscross method. 9th grade में पढ़ा था. चलो अभी moving on to next thing, that is reducing and oxidizing agent. So can we go for the complete a brief introduction? चलेगा ना यश? So we'll be having this brief introduction about the reducing and oxidizing agents. क्या होता है reducing agents और क्या होता है oxidizing agents? उससे पहले हम लोग समझेंगे कि what do we mean by this process, oxidation and reduction. चलो just a minute. So I guess you all might have learned the basic things about the redox processes in your grade 9. अभी हम लोग बात करते हैं oxidizing agent. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? We can also call it as oxidizer. Okay, what is it? It is the substance which is basically oxidizing other substances. अभी oxidizing मतलब क्या होता है? क्या addition होता है? Good, good अंकित. और कुछ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और भी कुछ होता है ना? ये क्या करेगा? इट इज एडिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, तो जैसे कि ऑक्सीजन भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो दैट विल बी आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या ऐड करेगा? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. ओके, इसीलिए व्हाट आर द मेटल्स? मेटल्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ जी, व्हाट आर मेटल्स? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करते हैं ना वो. सो व्हाट दे विल बी कंसिडर्ड एज reducing agents. Very good, correct. अच्छा, if I talk about halogens, वो क्या कंसिडर होंगे? ऑक्सीडाइजिंग और reducing agent? halogens क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग. करेक्ट. So Yash, did you get it dear? Please let me know, okay, if you have understood it. चलो next question है. So this is basically a quiz kind of thing. Just one word reply. So an alkali from group, sorry, period 3. Thank you. पीरियड नंबर 3 से कोई एल्कली मेटल बताइए. गुड, सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबल गैस विथ 3 शेल्स. कौन सी नोबल गैस है जिसमें 3 शेल्स प्रेजेंट है? Yes, very good, it is argon. Next is non-metals from period 2. पीरियड नंबर 2 में कौन कौन से नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं? How many and which are the non-metals present in period number 2? Fluorine, good. बस एक ही है क्या?
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, एंड और भी कुछ है? लिथियम। बेटा वो नॉन मेटल कैसे हुआ? It has carbon, oxygen, fluorine and nitrogen. These are the non-metals present in period number 2. Got it? Next question is metals from period 3. हाँ जी, थर्ड पीरियड में कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, ओनली 2 ना। थर्ड वैलेंसी वाला क्या है? एल्यूमिनियम, वो भी तो है। ओके, सो टेल मी द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 जिसका वैलेंसी है 4. Which element is present in period 3rd having valency 4? Good, silicon. So these type of questions, I guess they are pretty easy. They are interesting also. कुछ quiz kind of questions रहते हैं. So kindly make sure that you are having this grip. And यहाँ पर क्या है? You should be knowing the atomic number at least till 30. Okay? तो 30th elements तक कोशिश करिए, और 25 तक तो बहुत ही necessary because questions आते ही हैं. So kindly make sure that you know all the elements with their atomic number till atomic number 30 or at least till 25. Okay? चलो, moving on to next question. तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दे रखे हैं 19, 15, 8, 4 and 2. Among these you have to tell me first of all a metal with valency 1. इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर होगा which has got the valency 1? Yes, which atomic number? 19. Okay, what will be the configuration? Good. It will be 2, 8, 8, 1. That means the atomic number will be 19. Chalo. Next question is a solid non-metal of period 3. क्या एटॉमिक नंबर होगा उसका? थर्ड पीरियड में कौन सा नॉन मेटल है? 15. Okay, and what is that element? बेटा 15 सल्फर है. Sure, 15 सल्फर है. See, if I talk about 15, तो configuration क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? What will be the configuration? सल्फर 16 है, 2, 8, 5 और सल्फर की वैलेंसी 2 है, राइट? इट इज बिलो ऑक्सीजन.
तो यहाँ पर it will be 5 and the element is phosphorus. Okay, next is I just have to remove these two questions so that okay. Next question is rare gas. ये तो बड़ा ही easy है. A rare gas means noble gas. इसमें से noble gas का configuration कहाँ पर है? Really? करेक्ट है क्या बेटा ये 8? इसका EC क्या हो जाएगा 2,6. आउटरमोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है. 2. So it will be 2. And what is the gas? What is the name of the gas? कौन सी गैस है विद एटॉमिक नंबर 2? कम ऑन, इजीएस्ट क्वेश्चन. हीलियम. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज gaseous element with valency 2. करेक्ट. यहां पर 8 होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6 एंड एलिमेंट का क्या नेम है? बेरिलियम. Oxygen, correct. And from this group the last question is एक ही बचा है वैसे भी, element of group 2. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रुप 2 मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2,2 and the element is beryllium. So got it everyone? समझ में आया यहाँ तक? And the last question for the day is define atomic size and the trends in group and period. तो सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1, what do we mean by atomic size? क्या होता है atomic size? Yes, what do we mean by atomic size? No one? Correct. Distance between nucleus and outermost shell. तो यहाँ जो है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर जो भी हमारे आउटरमोस्ट शेल है वहां तक की जो डिस्टेंस है it is known as the atomic size. So I'll just write it. It is the distance between the center of the nucleus to the outermost shell of an atom. Correct. The first part is done.
ट्रेंड्स इन अ ग्रुप एंड पीरियड। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम में क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या कर रही है, इंक्रीज डिक्रीज सेम, क्या चल रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। अच्छा, रीजन क्या है, व्हाई डज इट इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप? रीजन क्या है, व्हाई डज इट इंक्रीज डाउन अ ग्रुप? Because of addition of new shells. Next is down, sorry, across a period. Across a period क्या हो रहा है, atomic size? What is happening across a period? सेम है, डिक्रीज है, इंक्रीज है? ओके, सो अक्रॉस अ पीरियड द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग। अभी कोई रीजन बता सकता है इसका, व्हाई इज इट डिक्रीजिंग? न्यूक्लियर पुल। अच्छा, व्हाट इज न्यूक्लियर पुल, क्या होता है न्यूक्लियर पुल? वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। होता क्या है न्यूक्लियर पुल? सुनिए, सी इफ आई टॉक अबाउट एन एटम, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है न्यूक्लियस में, है ना, और यहाँ पर आउटोमो ये जो शेल्स है यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, द न्यूक्लियस विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूक्लियर पुल। ओके, अब क्या होगा ना, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एंड इफ द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग मतलब कि वो ज्यादा फोर्स से जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ एटम इट विल बी श्रिंकिंग। ओके, so yes, the correct answer is nuclear pull, and the reason I have explained you, the atomic size decreases. समझ में आया यहाँ तक सभी को? Every single thing is clear. If there is any confusion, kindly let me know. Okay, so students, talking about community, तो आप लोग सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद यू कैन जॉइन द कम्युनिटी ऑफ योर एजुकेटर्स। ओके, ताकि कोई भी उनका अपडेट आप मिस ना करें। यू कैन गेट द सेशन नोट्स, यू कैन गेट प्रैक्टिस मटेरियल, यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक विद एजुकेटर्स। ओके, तो इफ यू वांट टू जॉइन माय कम्युनिटी यू कैन check the link which is given below, and these are the ongoing batches of grade 10 gladiators. Okay, and also students, if you take the subscription of grade 10 आपको मिलता है 11th और 12th का subscription absolutely free. Okay, and next is bugs bounty. तो ये है ना एक amazing opportunity है learners के लिए. So if you see कि कुछ भी inappropriate content है वीडियो में, तो आप उस इश्यू को क्लेम कर रिपोर्ट कर सकते हैं, and you can also claim your rights. Okay, and I hope that you might have understood every single thing that we have covered today. And if you have not yet subscribed, kindly go for it, subscribe it. You can like and share this video, and also join my Telegram channel to receive the regular updates about the classes. Okay, तो मिलते हैं next class में. Till then, keep learning, keep studying. All the very best. Thank you everyone. Take care.